Ladies and gentlemen, let's warmly welcome our distinguished guests of honor, Shri Bhupendra Yadav ji, the Honorable Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Honorable Shri Justice Vikram Nath, Judge, Honorable Supreme Court of India. We also have the august presence of Shri R. Venkataramani, the Honorable Attorney General for India, and Honorable Shri Justice Prakash Srivastava, Honorable Chairperson, National Green Tribunal. Ladies and gentlemen, may I request you all to please rise. और कृतज्ञता की गहरी भावना के साथ अति सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं भारत की यशस्वी राष्ट्रपति जी का, आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का. काइंडली रिमेन स्टैंडिंग फॉर द नेशनल एंथम. May I request the Honorable President Ma'am to please light the ceremonial lamp, the Mangal Deep, marking the auspicious inauguration of the conference. माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन है कि आप दीप प्रज्वलित कर इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मंगलमय शुभारंभ करें. मंचासीन सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण से भी निवेदन है कि आप इस शुभ परंपरा में सहयोग दें. देवी सजनों, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर, दीप प्रज्वलन की ये परंपरा सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि ज्ञान, ऊर्जा और सतत विकास का प्रतीक है. यह प्रकाश न केवल पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनशीलता और संकल्प का प्रतीक है, बल्कि यह हमें एनजीटी के मार्गदर्शन में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति हमारे उत्तरदायित्व, हमारे हर एक के इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाता है. इस दीप की लौ को प्रज्वलित कर हम पर्यावरण संरक्षण और न्याय एवं हरित भविष्य के प्रति अपने संकल्प को और सशक्त करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी. And ladies and gentlemen, we further invoke the blessings of the supreme power of the goddess of knowledge and wisdom of Ma Saraswati with the Saraswati Vandana. And to help us commune with the divine power, we have the students from the Rashtriya Bal Bhavan.
बने जयति जयति मां सरस्वती जयति वीणा वारिणी जयति जयति मां सरस्वती जयति वीणा वारिणी जयति जयति मां सरस्वती। Thank you to the children for bringing us the blessings of the divine. And ladies and gentlemen, after having welcomed the divine in our thoughts in our day, with profound significance and a very deep sense of gratitude towards all present here on the dais and off the dais, I welcome you all on behalf of the National Green Tribunal to the inaugural session of the two-day National Conference on Environment, organized by NGT, India's guardian of environmental justice. And ladies and gentlemen, as we come together towards addressing the pressing challenges of ecological sustainability, we are once again reminded of the profound truth that we have not inherited this planet, this beautiful earth, from our ancestors. In fact, we have borrowed it from our children, from our future generation. और इस प्रकृति पर, इस धरती पर हमारे द्वारा किया गया हर एक आघात हमारे आने वाली पीढ़ियों पर हमारे द्वारा किया गया अन्याय होगा। इस विचार को, इस धारणा को मूल में रखते हुए भारत और एनजीटी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अनेक कदम उठाता आया है। So in these 2 days, we not only showcase and highlight the various initiatives and interventions which are being taken by India and NGT towards environment conservation, but this conference will also serve as a clarion call, a call to action, a call for our collective efforts towards shaping a more cleaner, greener, beautiful, resilient future for ourselves and for our future generations. So as we tread on this path, ladies and gentlemen, and as we open the dialogue, may I first request the chairperson NGT, Honorable Shri Justice Prakash Srivastava ji, for his opening remarks, for his welcome address. आप सभी की तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करती हूँ एनजीटी के माननीय अध्यक्ष ऑनरेबल श्री जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी के विचारों को, जो कि पर्यावरणीय न्याय और सतत विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं। उनके स्वागत उद्बोधन के लिए वे आमंत्रित हैं। Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Minister of Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupendra Yadav ji, Judge Supreme Court of India, Honorable Shri Justice Vikram Nath ji, Attorney General of India, Shri Venkat Ramani ji, Honorable Judges of the Supreme Court, Honorable Chief Justices, Judges of the High Courts and all the dignitaries present in this august gathering, media personnel and dear students, a very warm welcome to all of you. First and foremost, I would like to express my immense gratitude to the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, for gracing this occasion. Her presence not only inspires us, but also underscores the importance of collective efforts in addressing the pressing environmental challenges of our times. Her guidance and vision remind us that the environmental justice is not merely a legal obligation, but a moral duty that we must uphold for future generations. It's an honor to have Honorable President of India here with us today. I am delighted to extend a warm welcome to Shri Bhupendra Yadav ji, Honorable Minister of Environment, Forest and Climate Change, who has tirelessly worked towards the policy reform and sustainable development and is instrumental in shaping India's environmental governance. His vision and leadership serve as a guiding force in fostering collaboration, innovation, resilience, and
in the face of environmental concerns. I warmly welcome Honorable Shri Vikram Nathji, Judge Supreme Court of India, whose wisdom and profound understanding of legal jurisprudence brings invaluable insights into the evolving landscape of environmental law and justice. I also extend my heartfelt welcome to Shri R. Venkatramani, Honorable Attorney General of India, whose expertise in environmental litigation and policy formulation has been pivotal in advancing the principle of sustainability and justice. I am delighted to welcome the Chief Justices and judges of various high courts. A special commendation is extended to the chairpersons, members, secretaries, high officials, and representatives from various boards, committees, public sector undertakings, and environmental authorities for their dedication to managing our natural resources. Finally, a special welcome to young students and aspiring legal minds. Your energy gives us hope for a sustainable future. It's an immense pleasure to stand before such an esteemed gathering, united by a shared commitment to safeguarding our environment. This conference stands out for its inclusivity, bringing together jurists, experts, faculty, and students, all united by a commitment to sustainability. The conference has been carefully designed to address these environmental challenges through 4 key technical sessions, each focusing on critical component of conservation. The first 3 technical sessions of the conference focus on 3 critical environmental pillars: air, water, and forests. The first session addresses the impact of air pollution on health and climate, analyzing major sources of air pollution while exploring solutions such as cleaner energy and urban greenery for better air quality management. The second session highlights the issue of water pollution and over-extraction while proposing sustainable conservation strategies to secure clean water for future generations. The third session focuses on forests and biodiversity, emphasizing conservation efforts, afforestation, and community-led movements. Together, these sessions aim to develop actionable solutions for sustainable future. The fourth and final technical session, focusing on key takeaways, serves as the cornerstone of this conference. It aims to synthesize the insights of discussions from previous sessions into actionable recommendations. This event is a beacon of hope and action, symbolizing our shared commitment to preserving and protecting our environment. I look forward to have an interactive discussion amongst all the stakeholders. As the Sanskrit adage wisely states, Prithvi Rakshati Rakshata, the earth protects those who protect her. Together, let us work toward a future that is greener, cleaner, and more sustainable. Thank you. Thank you, Lordship, for setting the tone in the context of the conference. And ladies and gentlemen, after these words of welcome by Honorable Chairperson, we would also like to express our gratitude to the dignitaries here on the dais by felicitating them. And as the Honorable Chairperson mentioned, the presence of our Honorable President here is further reaffirmation of our nation's highest commitment to environmental protection and sustainable development. तो आप सभी की तरफ से सबसे पहले हम माननीय राष्ट्रपति जी को आभार व्यक्त करते हुए हम उनका स्वागत करना चाहेंगे और इसके लिए मैं निवेदन करती हूं एनजीटी के हमारे माननीय अध्यक्ष ऑनरेबल श्री जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी से कि आप माननीय राष्ट्रपति जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें।
Please, ladies and gentlemen, join us as we express our heartfelt gratitude to Honorable President Ma'am. एक विशेष स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट कर उनका स्वागत करते हुए अभिवादन स्वागत आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी का। माननीय केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, we also express our gratitude to Honorable Chief Justice Vikram Nath, Judge, Honorable Supreme Court of India, and to Shri R. Venkata Ramani, the Honorable Attorney General for India. Thank you, Lordship. And I now take the privilege to invite a distinguished legal stalwart who has been at the forefront of India's legal landscape, Honorable Attorney General for India, Shri R. Venkata Ramani ji, for his expressions on this occasion. It's in the fitness of things that we have the Honorable President of India with us today to flag our deliberations on one of the most fundamental concerns of both nation and private lives. Let me welcome the Honorable President and express our sincere gratitude for her presence today. The presence of Judge Vikram Nath is indeed a valuable addition, and we look forward to his insights. My interactions with the Honorable Minister for Environment and Forests always leave me with a feeling of a person greatly committed to securing the ends of environmental promotion. Let me thank Justice Prakash Srivastava, Chairperson NGT, for giving an opportunity to share a few thoughts today. Honorable judges, ladies and gentlemen, and dear students, as one reflects deep enough on how everything that human beings do in the pursuit of happiness, comfort, better living conditions, and continued engagement of changing our lives and our living environment, we see that we engage ourselves in ever-increasing exercises of controlling what we do. No human conduct today can be beyond and above regulation. Every economic activity or intellectual inventions in expanding areas of technology or services are linked with social and individual impacts. What we produce and how we produce, what we exchange and how we exchange are all matters of changing nature's orders. We are entering a new machine age, unlike the machine ages of yesteryears. We entered a world of wealth of both great good and enormous waste. Global inequalities and global economic control and command systems in the hands of economic superiors still pose another set of challenges. Alarming pictures are drawn about where India stands in matters of air and water pollution and how its forest management is disturbing. All these are bound to happen in a world where we are still divided as nations with narrow domestic walls. But we cannot compromise on our obligations to deal with inequalities, poverty, and injustice, and also social justice. The question, however, is, can you not create a charter of making a world better with the world remaining better? India can do this, and all of us have a common responsibilities. I do not propose to delve into data and statistics about how degrees of pollution affect human lives and how India stands down below in some world survey index.
I do not think that we should go around with gloomy eyes and be on the doomsday timetable. All that we need to do is to take stock of our institutions and redesign them. A quiet look at how, in the area of air pollution, existing supervisory or regulatory agencies are either inadequate or unconnected or overworked will advise us toward urgent changes. Different set of industries call for different agency supervisions. Different areas of depletion of natural resources call for different but connected regulators and enforcement agencies. Institutions of regulations designed to deal with small-time or small-scale localized economic, industrial, or other human transactions are ceasing to be relevant. Governmental institutions meant to be policy-making institutions are under great stress in their ability to deal with enforcement. Government has a dual role to play, the one in promotion of social and economic development and the other to regulate development. There is no particular formula that can be followed in this regard. Urbanization means increasing energy consumption, which means increasing natural resources exploitation. While we are making significant strides in renewable energy resources, we are still far away from reasonable targets. The investments in this field seem to have hit regulatory issues. The UNEP report from 2009 onwards talk about green growth, green policy, and green lifestyles. Even as we have enacted a corpus of environmental laws and established monitoring and standard-setting bodies, such as basic pollution control boards, the question of satisfactory enforcement remains open. The National Green Tribunal Act and its functioning assured a most needed change and discipline in enforcement. However, the effective connection needed between government as a policy-making body, regulatory bodies, and adjudicating bodies has not happened. Human behavior and conduct in the realms of profit-making and economic gains, human behavior in its readiness or inclination to abide by compulsory laws seem to elude our enforcement reaches. As a student of law and how issues and challenges pass through adjudicatory gates of NGT or Supreme Court, I consider that our regulatory bodies need radical changes. Lack of social awareness and social acknowledgement of environmental consciousness are serious impediments that deserve deeper engagement. I also think that the corpus of our environmental laws need to be redesigned and the conventional framework where citizen involvement and engagement is in a mass measure is absent. And this will have to be addressed. We need to go beyond mere penal and coercive enforcement systems. A national environmental anthem, like the national anthem, will constantly alert us to own our responsibilities. I'll conclude my speech with such a model environmental national anthem. We need both social and governmental commissions and environment. A national commission and environment, which will be the link between policy-making units, regulation, and enforcement, and an aid to courts in adjudication, will be a great step forward. Less adjudication and more flexibility in enforcement should also be a mantra. The adversarial contours of our adjudication must also change. All this can be achieved by conceiving such a body as above said. Our common resolve can give us common strength. Let me sincerely appreciate the idea and conception of this conference, and let me read my national environmental anthem. A million thoughts of Mother Earth in splendid ways spread as birth, of trees and plants and grass and green, colors splash in myriad draws, red and yellow, pink or blue, violet, white and blends are many, petals soft in bonds are many. Every morn as the sun does greet with distant warmth as a gentle rap, Mother Earth in joy endless writes his tales of births with smiles. Our eyes are blind, our minds are closed to the boundless love of Mother Earth. With returns sought none, our demands made none. Wake up every morn like Mother Earth in loudest dance. I thank you for your attention.
Thank you, sir, for your insightful views and motivating and inspiring us towards our responsibilities and also guiding us on various regulatory aspects. May I now request another eminent jurist of the country, Honorable Shri Justice Vikram Nath, Judge, Honorable Supreme Court of India, to please address the congregation. इस भव्य सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट श्री भूपेंद्र यादव जी, लर्नड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया श्री आर वेंकट रमनी, चेयरपर्सन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, माय एस्टीम्ड कोलीग जस्टिस जॉय मल्ल्या बागचू, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट्स, ऑनरेबल जजेस from different high courts, distinguished members of the state judiciary from across the country, environmental experts, academicians, policy advisors, students, and all participants. It is a privilege to stand here today, especially in the presence of our Honorable President of India, to speak on a matter that deeply concerns every individual on this planet Earth, our environment. This conference serves as an invaluable platform. Not only does it bring us together to discuss the challenges we face, but it also offers us a chance to explore solutions that strike the right balance between economic growth and environmental well-being. Our beautiful country has made remarkable strides over the years. Yet, in the midst of this progress, our natural surroundings are facing tremendous pressure. We all see the environmental hardships that rapid development can bring. Thick smog in our cities, rivers choked with pollutants, and the fear of water scarcity in regions. These issues affect not only the health of our people, but also the cultural and spiritual connections we share with nature. Among the most visible problems today is air pollution. The capital city of India regularly experiences high levels of pollution. I believe we can all agree that it is not acceptable for our children to grow up in an environment where they need masks to play outside or worry about respiratory ailments at a young age. This is an urgent call for action, a signal that we must come together to regulate emissions, invest in cleaner technologies, and think of sustainable transport options that allow economic progress without compromising the air we breathe. Hand in hand with air pollution comes the issue of water pollution. For centuries, our rivers have been revered as sources of life, faith, and inspiration. However, many of these sacred and once pristine water bodies are now burdened with untreated waste. When I see these riversides, I feel a mix of nostalgia and concern. Nostalgia for how vibrant and pure these waters once were, and concern for our inability to preserve them in their natural glory. It is our collective responsibility to ensure that we do not pass on heavily polluted rivers to the generations that follow. Treating industrial effluents, enhancing sewage infrastructure, and encouraging local communities to maintain cleanliness along river banks are essential steps. If we fail to act, we risk compromising the ecological balance that sustains all of us. In our efforts, the National Green Tribunal has emerged as a beacon of hope. Since its establishment in 2010, the tribunal has played a pivotal role in streamlining the resolution of environmental disputes. By championing principles like the polluter pays and the precautionary principle, it has pushed industries, governmental bodies, and citizens alike to rethink how we use resources. Speedy decisions and specialized knowledge allow the tribunal to respond swiftly to environmental harms. Yet, as commendable as the tribunal's efforts are, we all know that we can only go so far without active engagement from every stakeholder. That is why gatherings like this two-day conference are so critical. When policymakers, academicians, environmentalists, judges, members of the executive, lawyers, and students come together, we benefit from a wide range of experiences and insights.
through the technical sessions, the aim is to address pressing questions. How can we integrate environmental considerations into major infrastructure projects without stalling economic development? Which technological innovations can help reduce pollution in a cost-effective way? How do we ensure that local communities, often the first to feel the impact of environmental degradation, have a genuine say in decisions that affect their surroundings? And how can we instill an ethic of stewardship in our youth so that tomorrow's leaders champion sustainability from the outset? I am particularly encouraged to see students from various law colleges and institutions here as they represent the future of environmental jurisprudence, leaders who will carry forward our commitment to sustainability. Our constitution mandates the state to protect and improve the environment and reminds every citizen of their duty to preserve our natural heritage. These are not mere legal provisions, they are an affirmation that caring for the environment is woven into the very fabric of our nationhood. As Mahatma Gandhi said, the future depends on what we do in the present. We must remember that hope is a powerful force for change. Across India, we see encouraging signs, cities adopting electric public transport, startups innovating in waste management and water purification, and communities organizing beach and river cleanup drives. These illustrate that a collective spirit can indeed move mountains. What we need is a concerted push to scale up these bright spots, integrate them into our policy making, and encourage their adoption nationwide. Collaboration is key. The government's policies must encourage green technologies, industries must be mindful of their environmental footprint, and civil society must continue raising awareness and holding us accountable. As members of the judiciary, we stand ready to uphold constitutional guarantees to a healthy environment and to ensure that violations do not go unchecked. However, no single institution can accomplish the monumental task of environmental protection alone. It is when we work in tandem that we can create meaningful and lasting transformation. In the days ahead, let us remember why we are here. We are here because we believe that progress does not have to mean pollution and that development can and must be in harmony with nature. We are here because we feel a deep sense of duty toward our children, grandchildren, and the generations yet to come. Let us use this conference to exchange ideas and experiences, build strong partnerships, and leave with a clearer vision and a renewed commitment to safeguarding our environment. Before concluding, I wish to thank the entire team of the tribunal, led by its dynamic chairperson, for organizing this event and everyone contributing the time, knowledge, and expertise to make this conference a great success. Let us leave with the understanding that the environment is not an external entity we manipulate at will. It is an extension of our collective selves, intrinsically linked to our health, culture, economy, and spirit. When we protect nature, we protect ourselves. And it is with that spirit of unity and responsibility that I urge all of us to continue this journey, forging a future where India stands tall as a symbol of sustainable growth and environmental harmony. May the outcomes of this gathering resonate far beyond these halls, guiding our policies, shaping our jurisprudence, and inspiring our collective journey toward a greener and more vibrant future for every citizen of our great nation. Thank you all. Namaskar. Thank you, Lordship, for your inspirations and guidance for the conference towards ecology and economy going hand in hand and towards the sustainable development of our country. और अब देवी सजनों आमंत्रित करते हैं हमारे माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी के विचारों को, आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, जिनके नेतृत्व क्षमता और दूरदृष्टि ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नीतिगत सुधारों और प्रभावी क्रियान्वयन को दिशा और गति दी है। Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji,
Honorable Judge, Supreme Court of India, Justice Shri Vikram Nath ji, respected Attorney General of India, Shri R. Venkatramani ji, Honorable Chairperson of National Green Tribunal, Justice Prakash Srivastav ji, ladies and gentlemen. It is my privilege and honor to address this esteemed gathering here at the National Conference on Environment 2025, organized by the National Green Tribunal. I feel humbled to be speaking before Honorable President, who is at the forefront of India's efforts toward environmental protection. Our Honorable President has been advocating for environment consciousness among children, youth, forest communities, and all sections of society. For that, Madam President, I extend my heartfelt gratitude to you. Environment protection is in Indian ethos. The mantra of Sarve Bhavantu Sukhina is confined not just to the protection of human rights, but the protection of all life forms, including the flora and fauna and our rivers and mountains. Ladies and gentlemen, environmental protection is also a fundamental duty enshrined in our Constitution. But international level, under the Paris Agreement, the world arrived at a consensus that the global community needs to unite to fight climate change. But the world also agreed that this fight must be based on the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities. That's the main idea before the world, and we are committed on that idea, CBDRC. The agreement states climate action will be based on national circumstances and also address the concerns of poverty alleviation. Poverty eradication is the main problem for developing countries. For that purpose, we can't stop anything only on the basis of environment. We need to move out from poverty. India reserves its right to grow responsibly based on our national circumstances. As a show to our commitment to climate action, India has fulfilled its Paris Agreement commitments on green energy 9 years ahead of the 2030 target. But the climate anxiety which has gripped the world cannot force India to give up its right to ensure food, water, energy, and quality of its 140 crore people. India, under the leadership, is confidently striking a balance between challenges and opportunities. Ladies and gentlemen, apart from the young students, many of us present here were way too young in the 1970s. Some of us were not even born, but a lesson from the 1970s is important mention. It was a time 1/3 of India and almost 35% of the developing world was in the grip of hunger. The developed world did not eat less to redistribute food to those hungry. We instead choose to path of green revolution. Our scientific community rose to the challenge and increased yields through better varieties of seeds, more fertilizer, and better technology. Under the Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji, India is focused on capacity building, knowledge sharing, and collaborating with the world to meet the challenges of climate change, biodiversity loss, and desertification. We are ramping up innovations in low carbon technologies. We believe rapid economic growth is the best defense against climate change for developing nations. And so, Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji is steering the nation towards green growth with programs such as National Green Hydrogen Mission. The nuclear energy mission for Viksit Bharat introduced in Budget 25-26 is poised to accelerate nuclear power development, positioning India as a global leader in advanced nuclear technology by 2047. Our Ramsar site network stands at 89,
we are proud to have Indore and Udaipur as the first Indian cities to be recognized as the wetland cities under the Ramsar Convention. At one of the world's largest and fastest growing economies, India is not only focusing on reducing its carbon footprint, but also creating millions of jobs through the green energy sector. Solar power has emerged as a key player in driving this transformation, contributing to both environmental sustainability and economic growth. The Indian government has set up an ambitious target to achieve 500 gigawatt of renewable energy capacity by 2030, by solar energy playing a crucial role in this vision. India is the world's third largest renewable energy producer today, with 46.3% of its energy capacity coming from renewable resources. While we act local, our impact is global. Under Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India has taken the lead in setting up International Solar Alliance, Coalition for Disaster Resilience Infrastructure, Leadership Group for Industry Transition, and recently we also established International Big Cat Alliance, with policies that nudge people to opt for environmentally conscious behavior such as Mission Life and Ek Ped Maa Ke Naam. I am proud to share with you that we are undertaking the journey towards Viksit Bharat, where ecology and economy will prosper together and not at the cost of each other. With that hope, I once again thank our Honorable President for gracing this occasion. I also thank each one of you for your presence. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Honorable Minister, sir, for guiding us on India's stand and our government's committed approach towards environmental sustainability and shaping a more climate-sensitive, clean, green growth for Viksit Bharat. Thank you, Honorable Minister, sir. और अब देवी सज्जनों, हम सभी माननीय राष्ट्रपति जी के विचारों को जानने के लिए इच्छुक हैं, तो आप सभी की तरफ से करबद्ध होकर मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित पर्यावरण, वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया श्री आर वेंकटरमणी जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजन, पर्यावरण के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर इस सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी तथा उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। विश्व समुदाय पर्यावरण के प्रति सचेत और संवेदनशील के लिए इसके संकेत मिलते हैं। इसी महीने में 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। 22 मार्च के दिन ही अर्थ आवर के समय विश्व समुदाय के ऊर्जा की खपत को कम करने का प्रयास किया गया। इसी तरह सितंबर में वर्ल्ड एयर डे, जून में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तथा अन्य ऐसे दिवस मनाए जाते हैं। पर्यावरण से जुड़े ऐसे सभी दिवस ये संदेश देते हैं कि हम प्रतिदिन अनेक उद्देश्यों और कार्यक्रमों का ध्यान में रखते हुए और जहाँ तक हो सके उन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। जागरूकता पर आधारित निरंतर सक्रियता तथा सबकी भागीदारी से ही पर्यावरण संरक्षण और संवेदन संभव हो सकेगा। न्यायाधीशगण एवं विधिवेत्ताओं के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में सक्रिय लोगों की भागीदारी इस सम्मेलन को और अधिक
उपयोगी बनाएगी। विद्यार्थियों को इस सम्मेलन में शामिल करने के लिए मैं आप सबकी विशेष सराहना करती हूँ। हमारे बच्चों और युवा पीढ़ी के इन्वायरमेंटल ट्रांजिशन का और अधिक व्यापक स्तर पर मनाना, सम्मान करना तथा योगदान भी देना है। हर परिवार के बड़े लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि बच्चे किस स्कूल या कॉलेज में पढ़ेंगे, क्या करियर चुनेंगे। ये चिंता ठीक भी है, लेकिन हम सबको ये भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे हवा में सांस लेंगे, उन्हें कैसा पानी, पीने का पानी मिलेगा, उन्हें चिड़ियों के मधुर आवाज सुनने को मिलेगा या नहीं, वे हरे भरे जंगलों की सुंदरता का अनुभव कर पाएंगे या नहीं। ऐसे सवालों से जुड़े विषयों पर इस सम्मेलन का ये गहन विचार करने का ये आयोजन है। यानी इस सम्मेलन के विषय हमारे देशवासियों को और पूरे मानवता के जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़े हुए इस विषयों के आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक पक्षों को भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस सभी विषयों से जुड़े चुनौतियों का नैतिक पक्ष भी है। ये हमारे नैतिक दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ पर्यावरण की विरासत प्रदान करें। इसके लिए हमें पर्यावरण के प्रति सचेत, संवेदनशील जीवन शैली अपनानी होगी, ताकि पर्यावरण का संरक्षण तो होएगा ही, इसके अलावा उसका संवर्धन भी हो तथा पर्यावरण और अधिक जीवंत बन सके। स्वच्छ पर्यावरण की विरासत और आधुनिक विकास का समन्वय करना एक अवसर भी है और हम लोगों के सामने चुनौती भी है। स्वच्छ पर्यावरण हमारा दैनिक जीवन और स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। धूल और धुएं होने वाले वायु प्रदूषण का फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। अनेक अध्ययन ये बताते हैं कि वायु प्रदूषण से लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण की स्वच्छता के लिए हर संभव प्रयास करके ही हम सब स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। देवियों और स्वजनों, स्वच्छ पर्यावरण की विरासत हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान की थी। हमारी एक प्राचीन प्रार्थना के अंत में 2 बार कहा जाता है, नमो मात्रे पृथ्वी, नमो मात्रे पृथ्वी, अर्थात धरती माता को नमस्कार है, धरती माता को नमस्कार है। धरती माता के प्रति बार बार सम्मान व्यक्त करने की इस भावना के पीछे हमारे भारतीय जीवन मूल्य है। हमारी मान्यता रही है कि प्रकृति माँ की तरह हमारे पोषण करती है और हम प्रकृति का सम्मान एवं संरक्षण करने की आवश्यकता है। विकास की भारतीय विरासत का आधार पोषण है, शोषण नहीं, संरक्षण है, उन्मूलन नहीं। इसी विरासत के अनुरूप हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पिछले दशक के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार तय किए गए नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को समय से पहले पूरा करने की अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार, विशेषकर पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार, सभी स्टेक होल्डर्स तथा देशवासियों की सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हमारे देश के एनवायरमेंटल गवर्नेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गवर्नमेंटल जस्टिस या क्लाइमेट जस्टिस के क्षेत्र में एनजीटी की निर्णायक भूमिका रही है। एनजीटी ने जो ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं, उनका व्यापक प्रभाव हमारे जीवन, हमारे स्वास्थ्य तथा हमारी धरती के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस अमूल्य योगदान के लिए एनजीटी के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष तथा इस ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल बेंच तथा जोनल बेंचेस में कार्यरत सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं। मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण परिवेश में ही बीता है।
हरियाली, पेड़ पौधे, पशु पक्षियां और नदी नालियां के बीच जिस जिले से मैं आती हूँ वहाँ सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। मैं कुछ कहने से पहले मैं जिंदगी का कुछ यादें आपके सामने रखना चाहूँगी। आप जानते हैं मैं एक गांव से आती हूँ। हरियाली, शुरू से ही मैं हरियाली से परिचित थी। मैं जब छोटी थी मेरे पिताजी ने, क्योंकि हम लोगों के पास कोई साधन नहीं था, लकड़ी से हम खाना बनाते थे। सूखे लकड़ी पिता माता चुन के लाते थे, आके फिर उसको घर पे भी उसको काटते थे, जलाने लायक बनाते थे। मैं रोज देखती थी, मेरे मन में प्रश्न उठता था, ये तो लाते थे यहाँ पर, क्यों फिर ये लकड़ी को चोट देते थे। मैं पिताजी को पूछा, ये तो सूखे लकड़ी, इसको अब क्यों फिर चोट देने से पहले पिताजी उसको नमन करते थे। मैंने बोलते सूखे लकड़ी, इसको नमन करने की क्या जरूरत है। उन्होंने बोले ये अभी बूढ़ा हो गया, सूख गया, लेकिन जिंदगी भर ये हम लोगों को फल दिए हैं, फूल दिए हैं, हवा दिए हैं, पानी दिए हैं। आज भी ये सूखे लकड़ी हम लोगों के काम पे ही लग रहा है। इसीलिए मैं चोट देने से पहले उसको मैं क्षमा याचना करती हूँ, नमन करती हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पास कोई और दूसरा उपाय नहीं। मैं जब पिताजी के साथ खेत में जाती थी, फावड़ा से खेत को चोट पहुंचाने से पहले पिताजी धरती को नमन करते थे। मैं पूछती थी, धरती को क्यों आप नमन करते हो? उन्होंने बोले कि धरती हम लोगों का माँ है, कितने सहन करता है। आज हम जो भी खेती करते हैं, उगाते हैं, खाते हैं, धरती है, इसीलिए हमें। इसके अलावा धरती के नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़ा रहते हैं, मेरे चोट पहुंचाने से वो भी मर जाएंगे, इसीलिए उसके पहले मैं क्षमा याचना करती हूँ। कभी कभी मैं अभी जाती हूँ रोड पे, तो कभी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ अभी गायब हो गया है, नहीं है। मैं लोगों से पूछती हूँ कि ये पहाड़ कहाँ गया? नहीं, ये बहुत सारे तोड़ा गया है, बहुत सारे काम में लगा गया है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मैडम हम मॉडर्न युग में जीते हैं, विज्ञान युग में जीते हैं, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। जिस चीज को हम बनाए नहीं, जिस चीज को बना नहीं पाते, उसको तोड़ते क्यों? पत्थर को आप बना सकते हैं। उस दिन में मेरे मन में जो वो लोग क्वेश्चन किए थे, मैं आंसर नहीं दे पाई। मुझे लगता है आज इस तरह के कॉन्फ्रेंस में उस तरह के आंसर को हम ढूंढे, क्योंकि जिस चीज को हम बना नहीं सकते, हम दूसरे कोई ऐसी चीजें ढूंढे कि जो हम लोगों का आवश्यकता चीजें है उसको हम भरपाई कर सके, विकास भी हो और विनाश को भी रोका जाए। जिस जिले से मैं आती हूँ वहाँ सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, वहीं पर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है, जो ब्लैक टाइगर्स का एकमात्र नेचुरल हैबिटेट है। बायोडाइवर्सिटी से मेरे सहज लगाव को अभिव्यक्ति करने का एक विशेष अवसर मुझे तो मिला था, जो वर्ष 2002 में मुझे ओडिशा की राज्य सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड एनिमल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मंत्रालय मिला। मैंने अनेक लाइव स्टॉक एड सेंटर स्थापित किए हैं। पशु पक्षियों के लिए संवेदना के साथ किए गए काम बहुत मन को संतोष देती है। हमारे जनजातीय समुदाय के लोगों ने
सदियों से प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखते हैं। जनजातीय लोग पेड़ को पूजा करते हैं। हमारे आदिवासी भाई बहन अपने जीवन के हर पहलू में आसपास के परिवेश, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के साथ उनके ध्यान रखते हैं। हमें उनकी जीवन शैली में से प्रेरणा लेना चाहिए। आज जो पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की समस्या के निदान का प्रयास कर रहे हैं, तो अब जनजातीय समुदाय की जीवन शैली और भी अनुकरणीय हो जाती है। जल, जंगल, जौन के बीच एक प्राकृतिक बंधन है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि पर्यावरण मंत्रालय ने इस बंधन से जुड़े एक अभियान का हाल ही में शुरुआत किया है। इस अभियान का उद्देश्य जंगली नदियां और जंगल स्रोतों के इकोलॉजिकल कनेक्शन को फिर से जीवंत बनाना है। मुझे बताया गया है कि इस सम्मेलन में भी जल और जंगल से जुड़े विशेष सत्र आयोजन किए जाएंगे। एनजीटी हमारे एनवायरमेंट एडजुडिकेटरी सिस्टम का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। हमारे एनवायरमेंट मैनेजमेंट इकोसिस्टम से जुड़े सभी संस्थानों को तथा सभी देशवासियों को पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क जैसे कदम बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के अभियान से भली भांति जोड़ सके। जमीनी स्तर पर किसानों को सहायता देने के लिए मेघदूत और मौसम जैसे मोबाइल ऐप की सुविधा दी गई है, जिनसे वे मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करके खेती से जुड़े निर्णय ले सके। विगत अक्टूबर महीने में केंद्र सरकार ने देश की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा उपयोग किए गए ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग की व्यवस्था लागू की गई है। ऐसा व्यवस्थाएं पर्यावरण विशेषज्ञों की भाषा में एडॉप्टेशन मेजर्स के अंतर्गत आती है। विश्व समुदाय को एडॉप्टेशन मेजर्स पर और अधिक जोर देने की आवश्यकता है। हमारे देश को और समस्त विश्व समुदाय को ऐसे रास्ते पर चलना है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, तभी मानवता की वास्तविक प्रगति होगी। भारत ने अपने ग्रीन इनिशिएटिव द्वारा विश्व समुदाय के सम्मुख अनेक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मुझे विश्वास है कि सभी स्टेक होल्डर्स तथा देशवासियों की भागीदारी के बल पर हम विश्व स्तर पर ग्रीन लीडरशिप की भूमिका निभाएंगे। हम सबको वर्ष 2047 तक भारत को एक ऐसा विकसित राष्ट्र बनाना है जहां की हवा, पानी, हरियाली और खुशहाली पूरी विश्व समुदाय को आकर्षित करे। इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता अर्जित करने के लिए आप सभी से निवेदन है राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े होने के लिए। जय हिंद। माननीय राष्ट्रपति जी का पुनः धन्यवाद। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता अर्जित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय राष्ट्रपति जी का उनके संवेदनशील मार्गदर्शन के लिए। धन्यवाद माननीय मंत्री जी का और मंचासीन हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण का। आप सभी का